हर इंसान का गट अलग होता, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स. Lentils do have good amount of protein, but most Indians are not eating enough protein. यानी हम ना जितना प्रोटीन होना उसका 25 to 30% भी हमें नहीं ले रहे. Let me explain to you in simple way. The daily recommended protein intake is 0.8 to 1 gram per kg of body weight. But guess what? Most people in India are consuming only 0.6 gram per kg of body weight. हर इंसान का गट अलग होता, just like our fingerprints. So you've got to choose which protein suits you the best. You can also switch from different protein sources, whether plant or animal. Protein क्या है? It's the building block of life. It helps in muscle repair and growth, enzyme production, hormone production, immune system support, cell and tissue maintenance. अब ये बोलो ना को कि दाल में बल्ला का प्रोटीन होता. दाल में प्रोटीन होता, लाइक लेंटिल्स डू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट जब हमें दाल बनाते हैं ज्यादा पानी डालते हैं और जो लेंटिल्स की क्वांटिटी हो जाती वो बहुत डिवाइड हो जाती. दैट मीन्स प्रोटीन की जो मात्रा है, जो लेवल है, बहुत कम हो जाता वहां पे. I've tried my best to simplify it as much as possible. The best plant and animal sources of protein that should be consumed on a daily basis without removing or excluding the food you've been consuming regularly. You can either just eyeball them or consume it by weighing them on a daily basis depending on whatever your goal is. अब मेजॉरिटी जने ये नहीं करते। वे कर को खाने का तुम्हारे गोल के ऊपर डिपेंड होता। तुम ना कितना जल्दी वेट लॉस करना है या वेट बढ़ाना है, वो कैलोरी ट्रैकिंग या कैलोरी काउंटिंग से एग्ज़ैक्टली मालूम होता। नहीं करे तो भी चलता। By consuming any two of these for your lunch and dinner along with the breakfast will give you around roughly 70 to 80 grams of protein, which is highly ideal for a 70 to 80 gram of 80 kg of individual. For the breakfast, you can consume 2 eggs along with 1 cup of milk with whatever you've been consuming. So the protein will be approximately 20 grams in your breakfast. For lunch and dinner, you can pick any two from the following I'll provide, and these are all in raw form. 50 gram of chicken breast contains 15 gram of protein. 50 gram of chole or chickpeas contain 10 gram of protein. 100 gram of edamame contains 11.5 gram of protein. 80 gram of paneer contains 15 gram of protein. 50 gram of soya bean contains 18 gram of protein. 50 gram of katla fish contains 10 gram of protein. 80 gram of rohu fish contains 13 gram of protein. This plan is ideal for a 70 to 80 kg individual who is slightly active. I'll give you one more tip. You can just weigh the food for initial few days and then eyeball it. अब बहुत जन को सेट नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स. हमारे जो गट है, हमारा जो पेट है, उसे एडजस्ट करने में चीजों को टाइम लगता. सो यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दीज प्रोटीन सोर्सेस फॉर कंजम्पशन. मतलब थोड़े कम से स्टार्ट करना एंड देन कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल यू रीच दिस अमाउंट आई स्पेसिफाइड. थोड़ा सा एफर्ट लगता लेकिन बड़ा फर्क पड़ता. And finally, follow for more such simple fitness and nutrition tips. Thank you.